Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 25th July, आज 25 July Tuesday है, and we are here with the Hindu analysis of 25th July. Now, so this is the important article. Government is ready for discussion on Manipur. Amit Shah tells Parliament. So this is an article which we are going to discuss today. अगर मेरी आवाज आ रही है, just write in the comments. Yes sir, you're audible. If I'm audible, just write in the comments. Okay. एक यहाँ पे article है, Kharif sowing turns around to rise 1.2%. Okay. Can you please differentiate between Kharif crop and Rabi crop? I mean, which crop is for summer and which crop is for Rabi? Winter season. Can you please give me the answer to this question? And if you know any example, it will be much better. Kharif crop and Rabi crop. Okay, so I hope you are aware. Things about Manipur is in the news. You must be following these news, and that is what the session of Parliament is going. So opposition MPs are insisting the Prime Minister to give a suo motu statement on the situation in state before the discussion starts. So opposition MPs actually have requested the Prime Minister that he should give a statement in the Parliament regarding the Manipur issue and all. So Union Home Minister said that the government was ready for discussion on Manipur on the floor of the House, as the country needs to know the truth about the sensitive situation in state. He briefly spoke in the House before it was adjourned for the day. Adjourned मतलब उस वक्त स्थगित कर दिया गया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना. So means so the House was stopped, you can say, on that day after his speech and all, as opposition members trooped into the well, insisting on statement by PM on Manipur and all. That is what it was in the news. ठीक है? Yes, I was asking about Kharif crop and Rabi crop. The Kharif crop जो होता है वो summer में होता है. Yes. वेरी गुड. जनरली जून जुलाई में सो किया जाता है ना, एंड हार्वेस्टेड अराउंड नवंबर दिसंबर. ठीक है. एंड रबी क्रॉप इज अपोजिट. ओके, इट इज सोन अराउंड नवंबर दिसंबर एंड इट इज एक्चुअली हार्वेस्टेड इन मार्च, है ना. सो दिस इज रबी इज अ विंटर क्रॉप. ये ठंड में होता है, ये गर्मी में होता है. ओके. यस यस. ओके. Yes. Now the next question is, who is the Speaker of Lok Sabha? Your options are Mr. Jagdeep Dhankar, Mr. Om Birla, Ms. Sumitra Mahajan, Ms. Meera Kumar. What is the right answer to this question? Speaker of Lok Sabha कौन है आपको बताना है. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना. Everyone please press the like button. Yes, काफी सारे लोगों ने आंसर किया है. मानु, प्रांजलि, सानिया, रश्मिकांत, प्रिया, गौरी, नितिका, you all right. Om Birla is the right answer to this question. अच्छा, who is the chairman of Rajya Sabha? Who is the chairman of Rajya Sabha? ऐसे लिखते हैं, Dash is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Yes. So होता क्या है कि vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. So when I'm talking about speaker, the answer is option 2. And when I'm talking about vice president or chairman of Rajya Sabha, it is actually Mr. Jagdeep Dhankar. Okay. Yes, I hope you are aware of this. So this is the green carpet is Lok Sabha. So the person sitting here, this is presiding officer. So in case of Lok Sabha, it is the speaker who is the presiding officer. आप देख सकते हो. You must have seen him, in TV and all. So similarly, ये green कपड़ा है ना. So if there is a red, you can say carpet, it is actually Rajya Sabha. Green carpet Lok Sabha का होता है. Just have an idea about it. Monday से Thursday होता है, एकता यादव. My class happens from Monday to Thursday. Okay. Yes. Okay, so that is what it was mentioned in this article, that Lok Sabha Speaker Om Birla requested the members to return to their seats, but they did not and all. So that is why the house got adjourned and all. That is what you should be knowing it. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ explain करने का है नहीं detail में. Now let's talk about this one. Israel's controversial judicial reform bill gets parliament nod. ये थोड़ा सा important है because for the past 2-3 months it has been very much in the news.
Now, judicial controversial bill, actually it is also called as Israel's judicial overhaul. Judicial overhaul. A lot of massive protests have also happened in this regard. Now, why protests have happened? Because the critics says that this is actually reducing the power of Supreme Court of Israel. This is what the critics says, that the Prime Minister wants more power and it is reducing the power of Supreme Court and all. So Israel's hard right government on Monday passed through a parliament a key clause of its controversial judicial reform package despite months of mass protests and concerns and all. So a lot of protests have happened in this regard. So you can see it here. Israel protests, doctors announces a strike amid mass demonstration over judicial overhaul. Doctor ने strike किया. In fact, there have been a lot of protests from different places. And in fact, Israeli mission, बहुत सारी embassies भी close हुई थी कुछ महीना पहले, आपको शायद पता होगा. So the protest was so massive that even the embassies got closed and all. So much actually the protests happened against the Benjamin Netanyahu's decision. So he is the Prime Minister, Benjamin Netanyahu. I hope you are aware. And this was passed in the Parliament of Israel. What is that called? Israel के Parliament का नाम क्या है? Anyone? Yes, Gauri is right. Knesset, this is Knesset actually. एकता जादव we have discussed yesterday's class. आप देखो search करो मिल जाएगा. ठीक है? Yes, that's called Knesset. Yes, Gauri, you all are right. Yes. Okay. Yes, the bill was passed hours after Mr. Netanyahu returned to the Knesset only a day after undergoing a surgery to have a pacemaker. So after coming from actually getting surgery, pacemaker जो होता है heart में लगता है ना, for proper functioning of heart, he came back and he got the bill passed and all. Just know the president name also. 𝗖𝗂𝗴𝗏 Herzog is the president of Israel. Okay, can anyone tell me what is, since it is in news, what is the capital of Israel and what is the currency of Israel? ये दोनों बताइए. Because whenever things are in news, they go and ask in detail. जैसे पूछा था currency of Ukraine, पूछा था exam में, है ना? So capital of Israel is yes, you can say Jerusalem. JERUSALEM. And the currency is shekel. New shekel कहते हैं, है ना? New shekel. ठीक है? I think this is the spelling. आप देख लेना एक बार. Yes, Knesset तो parliament है, Iram. I'm asking capital. So capital is Jerusalem and currencies is new shekel, and Knesset is actually the parliament of Israel. ठीक है? Parliament of Israel. Okay. Yes. Okay. So just have an idea about it. Now let's move on to page number 3. एक दिल्ली के न्यूज में एक आर्टिकल था, यमुना river still flowing above danger mark, may rise further. So I hope you are aware, recently we have seen flood like situation in Delhi and all. So if you see it, this is the danger mark and it is above it. अभी भी जो है वो danger mark के above flow कर रही है, if you are seeing it carefully. So that is what you should be knowing about it. ठीक है? तो आप देख सकते हो, है ना? ये नीचे थोड़ा सा गया था, फिर यहाँ पे आप स्पेशली आफ्टर जुलाई देख रहे हो, यहीं पे ना बाढ़ उड़ाया था सस्ते थे. So I mean from 23rd July onwards we are seeing it actually crossing the danger mark and all. Just have an idea about it. Central Water Commission से ये लिया गया. Go and read something about Central Water Commission. Whether it's a statutory body, constitutional body, क्या है, कौन सी body है, find out करो. When it was formed, who is the member. Just have an idea, because yes, heavy rainfall is very much in the news and all. So you should be knowing something about Central Water Commission. Find out कीजिए, ठीक है? Now एक states page में article था, ISRO to launch PSLV-C65 carrying Singapore's new imaging satellite on 30th July. So कुछ ही दिन में, in the next 4-5 days, 𝗟𝗏𝗴𝗏 Herzog है, ये president का नाम है. Someone is asking. This is the president of Israel, 𝗟𝗏𝗴𝗏 Herzog. ठीक है? 𝗟𝗏𝗴𝗏 Herzog actually पढ़ते हैं, president of Israel. Okay. Now, so we are talking about this, that ISRO, Indian Space Research Organization, will be launching this PSLV-C65, ये rocket का नाम है, carrying this satellite. तो rocket, ये rocket हुआ,
और इसके अंदर सैटेलाइट जो जाएगा, सो द नेम इज DSSAR, ठीक है ना, सिंथेटिक अपर्चर रडार, SAR लिखते हैं उसको, सैटेलाइट विद अलॉन्ग विद 6 अदर सैटेलाइट्स. सो वन ऑफ द सैटेलाइट्स विल बी सेंड बाय सिंगापुर का एक रहेगा उसमें से, ठीक है. एंड दिस विल बी लॉन्च अगेन फ्रॉम श्रीहरिकोटा. मैंने बताया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, which is in the state of Andhra Pradesh, famous for launching rockets and all, है ना. So just have an idea about it, है ना. So अब launch करेंगे तो आपको पता होगा, when it will come in the news you will get to know about it 4 or 5 days later. Keep on following this news. Now, okay, before moving on, guys, this is a CLAT 2024 comprehensive course. So we are running a crash course also. So if you have any question, you can call on this number. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests are there. And this is actually a 3-day free trial also. You can attempt this 3-day free trial after going to the app, downloading the app, going to the CLAT section. Okay. Just have an idea about it. Now, let's move on to the editorial. अब editorial पे चलते हैं ये चारों editorial. And unavoidable controversy over sample survey. अब देखो ये बहुत ज़्यादा statistics में गए हैं. The author has gone very much in statistics, but कुछ basic चीजें बता देते हैं. जैसे this was in the news recently. I hope you are aware. Government forms new panel to review all NSO data. So who will be the chairman of the new panel? मैंने बताया भी था. Please answer it. I'm waiting for the answers. So because there were issues of data and all, that is why NSO data को review किया जाएगा. These things were coming in the news. Okay, so इसी पर आर्टिकल है. There was controversy recently over the sound data collection. यानी sound मतलब यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का, good quality data collection, especially when it comes to some of the important national level survey. An article by 𝗟𝗲𝗴𝗏, a member of Economic Advisory Council of PM, which published in a leading newspaper, cast doubts. Cast doubts मतलब question the doubt, question the veracity or question the authenticity. ठीक है. हाँ, इसके जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो प्रणव सेन रहेंगे. प्रणव सेन. Yes, many people have answered it. Very good. So तो इसी की बात कर रहे हैं कि she actually wrote, she is a member of Prime Minister's Economic Advisory Council. She questioned the credibility of data, मतलब quality of data and all. ठीक है. So that is what it was in the news. ठीक है. Basically, this is overestimating the rural population and underestimating the urban population. This is actually the main issue about it. देखो होता क्या है? If you see, the census is quite old. The last census which happened is census 2011. शायद आपको पता होगा. And how much percentage of urban population is there? Urban population की कितनी percentage है? लगभग 31.16 है, तो आप 31% मान लो. ठीक है, according to census 2011. And percentage of rural population 100 से minus कर दो. So that will be around 69%. ठीक है. Okay, लेकिन ये बहुत पुराना सेंसस है ना. Now generally we are moving towards more urbanization. So the probability is कि the urban population should have increased by now. आज हम लोग 2023 में 12 साल बाद. So maybe it is not 31%, maybe 34, 35%. We don't know exactly, but it should be more, है ना. तो अगर हम लोग 31% से ले रहे हैं तो that will be underestimation of urban population, है ना. Underestimation of urban population and overestimation of rural population. हम लोग ज्यादा मान लेंगे. Overestimation of rural population. ठीक है. इसी की बात करें. देखो अगर the author has talked about it, this term है ना. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना. Overestimating the rural population and a percentage wise, of course, and underestimating the urban population. ठीक है. So that is what you should be knowing it. Consequently, they estimate from these surveys systematically and underestimate the improvements across the country and all. That is what is being talked about. ठीक है. तो उससे क्या होता है? हाँ, अभी तक 2021 का वाला सेंसस जो आइडियली होना चाहिए था, till now it has not been done. Okay, so that is what is being talked about. It is important to re-emphasize the point that all surveys listed do adopt scientific samples and all. तो उसी सब की अब बात करें, इतना डिटेल नहीं जाना आपको. ठीक है. Then on the issue of underestimation of proportion of urban population or an overestimation of rural population, है ना, इसी की बात की जा रही है. ठीक है. So the estimates of number of households and all. अब इतना डिटेल आपके काम का नहीं है, इतना डिटेल जाना. कुछ फैक्चुअल चीजें आपको पता होना चाहिए. एक तो मैंने बताया NSO याद रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, which is a merger of the NSSO and CSO. ये मैंने पेड क्लास में पढ़ाया भी है ना. फिर एक और आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन.
please go and read something about this also. So it was established in year 2000 on the recommendation of Rangarajan committee. ठीक है, इसमें कौन कौन चेयरमैन है? So Professor Rajiv Lakshman Karandikar is actually the chairman and other members are there, you can see. Of course it must works under MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. ठीक है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बेसिक थिंग्स, बहुत डिटेल में इसके नहीं जाना, बहुत डिटेल आर्गुमेंट दे रहे जो आपके काम करनी है, ठीक है. सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर अस, ठीक है. सो इज गोइंग कि क्या क्या एलिगेशन है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इतना थोड़ी डिटेल पूछेंगे, बेसिक थिंग्स पूछेंगे, दे विल बी आस्किंग, ठीक है. Now National Statistical Day is on which date? Your options are 25th July, 29th June, 25th June, 2nd June. Okay. Now National Statistics Day जो है कब मनाया जाता है? And please tell me the reason why this day is celebrated as National Statistics Day. ठीक है, रीजन ये बताना है क्यों. National Statistics Day, because we are talking about right now statistics and all. Yes, the right answer is option 2, 29th June. Many people write Priya Chavan, Sania Gauri, Alok Dhananjay, Manu Pranjali, Kumkum Nitika, Tanusha. Yes. Professor Prashant Chandra, हाँ, PC Mahalanobis की याद में actually. Reason is there was a very famous person called as Professor PC Mahalanobis. He was very instrumental. इनफैक्ट जो सेकेंड 5-year प्लान था, अगर आपको पता होगा, सेकेंड 5-year प्लान आई थिंक विच वाज फ्रॉम 1956 to 61, ये इन्हीं के नाम पता है. इनको महालानोबिस प्लान भी कहते हैं. आपको पता है ये महालानोबिस प्लान? डू यू नो दिस? ओके. ही वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इनका बहुत बड़ा नाम है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है. So one of the topmost name in the field of statistics, ठीक है. So you should be knowing it, है ना. National Statistics Day. अब इस साल का थीम फाइंड आउट करना, what is the theme, go and find out these things. So he was there, है ना. तो आप देख सकते हो. Be careful, we are talking about National Statistical Day, Statistics Day on 29 June, है ना. इनकी याद में मनाया जाता है. एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे होता है, वो 20 अक्टूबर को होता है. ये वर्ल्ड वाला, ये नेशनल इन इंडिया लेवल का, ये ठीक है. So this is, I would say, is more important because of course we are talking about India level is more important in the name designated for PC Mahalanobis, है ना. So he was a statistician and all, है ना. And he was instrumental in establishing Indian Statistical Institute in 1931. ठीक है, याद रहेगा? Okay, yes. Now let's move on to India's ties with Sri Lanka are bound by Tamil question. Actually, recently the Tamil president was in India. So what is the name of, so not Tamil president, sorry, Sri Lankan president was in India. So what is the name of Sri Lanka's president? कोई बता सकता है? And recently there are a lot of economic crisis in Sri Lanka. We are also helping it and all. I hope you are aware of this. With a joint statement on economic cooperation, India and Sri Lanka outlined a forward-looking vision for their relationship entitled Promoting Connectivity, Catalyzing Prosperity, India, Sri Lanka Economic Partnership and all. है ना? Yes, Ranil Wickremesinghe, very good. Very good, Pranjali and Manu, you all are right, huh? And Ranil Wickremesinghe is actually, है ना, in Delhi last week lays out vision in 5 areas. कौन-कौन area? Maritime, air, energy, trade and people-to-people initiative. New investment in maritime and air connectivity will involve developing ports and airports, है ना. है ना, maritime मतलब क्या? Water से related, navy से related, so development of ports और air connectivity in airports, है ना. Resuming ferry services, ferry मतलब छोटी सी boat जो type की होती है ना, motor boats type, है ना. So he'll be resuming the motorboats and all, and expanding flight networks to connect Tamil Nadu and Sri Lanka's northern eastern province and all. ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा? India ties with Sri Lanka are bound by Tamil question. Okay, why this is news? Because I hope you are aware, this is Tamil Nadu, state of Tamil Nadu, this is Sri Lanka. They have an old relationship. So यहाँ पर जो है this region में mostly actually the Tamil minorities live. I hope you are aware, आपको स्कूल डेज में पढ़ाया गया होगा that Sinhala is in majority, है ना. ये वाला देखो, ये NCERT का ये इमेज है, ये वाला this one I am showing it, है ना. आपको याद होगा, this is I think class 9th और 10th में political science की बुक में था, है ना, कि these are Sinhalese community and these are Tamil community and all, है ना. I hope you must have studied. तो यहाँ पे जो तमिल है, these are, I mean, Tamil people of course. So in fact there have been a lot of times where the election, it has become an election issue here. Because of this, that protection should be given and all.
एंड देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म, ये भी पढ़ाया गया था स्कूल डेज में, है ना, मेजॉरिटेरियनिज्म, द बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट इट वाज आई बीन टॉकिंग अबाउट. इसीलिए ये बता रहे हैं तमिल क्वेश्चन, है ना, दैट इज व्हाट दे टॉकिंग अबाउट तमिल क्वेश्चंस एंड ऑल. तो देखो 75% सेनालीज हैं, इंडियन तमिल्स 4.2% है, और श्रीलंकन तमिल्स भी है. ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स भी तमिल्स ही होते हैं. दे हैव गॉन वेरी मच, मतलब बहुत पहले था, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक. ये जो है ब्रिटिश के जमाने में गए थे फॉर प्लांटेशन एंड ऑल, एंड दे आर आल्सो तमिल्स, दे हैव गॉन मेनी, आई मीन मोर देन 400-500 इयर्स बैक. ठीक है, और परहैप्स 1000 इयर्स बैक. तो दोनों तमिल ही है. श्रीलंकन तमिल वन इज कॉल्ड, अनदर इज कॉल्ड एज इंडियन तमिल लिविंग इन दिस रीजन. इसमें लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सिविल वॉर तक हो गया था, LTTE वाज देयर एंड सिविल वॉर हैड हैपेंड. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट व्हिच गॉट एंडेड इन 2009. ये सब चीजें आपको पता होगी, उम्मीद करते हैं ना. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. सो यू कैन सी रणील विक्रमसिंघे, द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन इंडिया, मीटिंग विद PM मोदी. एक और है, which amendment, can you please tell me which amendment of Sri Lanka talks about giving rights to Tamil Nadu, rights to Tamil. उस amendment का नाम बताइए. राजीव गांधी जयवर्धने agreement भी साइन हुआ था, and till now this amendment has not been fully implemented. If it is implemented, Tamil people will be given some autonomous rights in those regions. हाँ, 13 amendment, yes, number of the very good, 13 amendment कहते हैं. आप देखते हो यहाँ लिखा हुआ भी है. हाँ, for devolution of powers to north and eastern province. North and eastern province क्यों लिखते हैं? यही वाला north and eastern province. तो ये वाला में ना actually the यहाँ पे भी देख लो, ये वाला जो region है, there is actually the population of Tamil community, है ना. So some actually sort of autonomy will be given if 13th amendment will be implemented. And it envisages what? That both Sinhala and Tamil will be official language. ठीक है, दोनों को Tamil language and English will be a link language. Link language मतलब दोनों को link करने के लिए if there is official communication between Sinhalese and Tamils, then English can be used, है ना, ताकि दोनों को समझ में आए, common language कह सकते हो. And this actually Indo-Sri Lanka Accord was signed between Mr. Rajiv Gandhi and Mr. President of Sri Lanka, Mr. Jayawardene and all. So it talked about it. लेकिन अभी तक शायद पूरी तरह there are practical problems in devolving land, police and financial powers and all. ठीक है, अभी भी इसमें issues है, पूरी तरह implement नहीं हो. But 30th amendment you should be knowing it. It is very very important. Okay? Yes. Now let's move on to the next one. ASEAN, a persistence with dialogue and a trodden path. So अब ASEAN, I hope you are aware. इसको ASEAN कहते हैं. This is India. तो ये वाला जो है ना. These are ASEAN nations. 10 ASEAN nations. Recently 11th one has also been added. Association of Southeast Asian Nations, है ना. So the author is talking about the recently the 56th foreign ministers meeting also happened, ठीक है, of ASEAN, है ना, and held in Jakarta, Indonesia in mid-July and all. So that is what is being discussed. So all major players, है ना, an elaborate institution created by ASEAN has become an inclusive platform that draws nation near, far and all. ठीक है. So इसी तरह की बात हो रही. अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं. So foreign ministers meeting is indicative of ASEAN's brave attempt to navigate through transformative changes in the present decade, the impact of COVID, economic slowdown. अब देखो, the world is affected with COVID, economic slowdown, Russia-Ukraine war, climate change, है ना, Cold War type means US और China के बीच having some sort of tussle or all and all. So that is what is being talked about, है ना. Addressing foreign minister, the foreign minister of Indonesia argued that ASEAN's ability to manage regional and global dynamics depend on two critical ingredients, unity and centrality. तो इसी की बात की, ये दोनों सबसे important चीज है. These are the things being talked about, है ना. ASEAN's internal difference on issues such as Myanmar keep resurfacing and all. अब देखो ASEAN में भी बहुत सारी problems हैं, है ना. जैसे first problem is Myanmar itself. So I hope you are aware military coup is there. Yes, and things are not very fine in Myanmar. Then even in Thailand, yes, we said we have discussed a lot of, but the military is very powerful. Still, actually, they are yet to get democratic government. मतलब अभी elections had happened. Cambodia में भी वही है, ऐसा कुछ है, ठीक है. So if you find these regions, there are a lot of places where actually the military is quite powerful and democratic ideas are not that much strong. So इसी सब की बात हो रही है. Then China enjoys close political ties with ASEAN states like Laos, Cambodia and Myanmar. हाँ, अब देखो ये चाइना है. चाइना का म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है. सो लाइक अगर आपको पता हो, यहाँ पे कायोकपू पोर्ट है, फिर यहाँ पे रियाम पोर्ट है. चाइना इज गोइंग टू सेट अप परहैप्स इट्स बेस एंड ऑल.
तो ये सब की बात हो रही थी ना, लाओस से भी. सो दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, तो बहुत सारे आसियान कंट्रीज आर गोइंग क्लोज टू चाइना बट नॉट फिलीपींस, है ना. फिलीपींस लेकिन नहीं देखो लिखा भी, while the Philippines has become more assertive of its latest claim to South China Sea. शायद आपको पता होगा that there are disputes in this South China Sea region. So Philippines and China का dispute था which went to permanent court of arbitration. I hope you are aware of this. I had discussed it. मैंने इसको discuss भी कराया था, है ना. So Philippines is not very close to China, but other ASEAN nations खास के Myanmar, Laos, Cambodia, they are actually close to China and all. ठीक है. That is what is being talked about. Okay, the Chinese argument is that US is solely responsible for poor relation because it steadily refuses to accept and accommodate China's peaceful rise and all. So China puts allegation on US. तो ये सब तो होता ही रहता है international relation में. One country keep on putting allegation on others and vice versa. ठीक है, so that is what you should be knowing it. Okay, हाँ. फिर एक साइड में आर्टिकल नेवर एंडिंग सागा, ये आपको पता होगा. The dispute between the government of Delhi versus Lieutenant Governor. Who should be handling services? The Supreme Court passed an order, 5-judge bench, and it said that it is not the Delhi government should be transferring officers and IAS officers and all. Then the president promulgated an ordinance in this regard. Okay. So that is what you should be knowing it. Okay. तो उस पर फिर then again the Delhi government went to the Supreme Court against this decision and Supreme Court has decided to again send it to a 5-judge bench. ठीक है, so that is what you should be knowing it. इसी की बात कर रहे हैं ना, services. ये सब आर्टिकल पता होना चाहिए. 239AA which deals with which अच्छा please tell me which constitutional amendment brought this article 239AA. कौन सा amendment लाया था बताइए तो. I'm waiting for the answers. And this power actually it talks about the powers related with the Delhi government and Lieutenant Governor and all. ठीक है, बताइए. Which article brought the concept of 239A? Yes, 69th Amendment. Yes, very good. Pranjali, good. Garima, Gauri, Safi, Priya, you all are right. 69th Amendment. ठीक है. So इसी की बात करें, then again the matter has been sent to the Constitution bench and all. ठीक है, तो ये सब की बात हो रही है. ठीक है, I have told you the things. So let's wait for another judgment of Supreme Court, है ना. So what will happen? We'll get to know about it, है ना. ठीक है, सर्विसेज का ट्रांसफर आप समझ रहे हैं. IAS ऑफिसर्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स, एंड डैनिक्स होता है दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस. ये क्लास ग्रुप बी सर्विस कहलाती है. ठीक है, ये ग्रुप ए सर्विस है. ठीक है. Okay, so just have an idea about that. Okay, now the next one, move on to the next one. Opinion, a big step in reducing the risk of disaster. And the disaster management is also nowadays very much in the news. Why? Because yes, we are witnessing a lot of disaster. So can you give some examples of disaster? Like जैसे हम लोग normally सुनते हैं क्या, cyclone है, tsunami है, earthquake है, then a lot of disaster, drought है, landslide है, a lot of disasters do keep on happening and all. ठीक है, so that is what you should be knowing it. So the author is talking about हाँ अभी forest fire है. Yes, this is also forest fire. This is happening in the 𝗶𝗶𝗀𝗶𝗃 and all. So massive forest actually fire is happening in Greece and Canada. तो ग्रीस और कनाडा में बहुत तेजी से आग लग रही है. फॉरेस्ट फायर इज देयर. और क्या बता रही है, तो 2 weeks ago रिवर ऑफ यमुना ब्रीच द हाईएस्ट फ्लड लेवल. अभी मैंने बताया that yes, we have seen over flooding in Delhi and all, which broke the record of 45 years and all, है ना. So लैंडस्लाइडिंग वगैरह तो खास पहाड़ी एरिया में होता है, लाइक रायगढ़ में भी हुआ था, हमें बताया, महाराष्ट्र में. Then in Himachal also we have seen these types of things, मतलब काफी ज्यादा over flooding and all. So that is what is being talked about. अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन. बिकॉज अभी हम लोग उसी के बीच में, Sendai framework for disaster reduction from 2015 to 2030. Sendai is actually placed in Japan and all. तो इसमें है क्या एक्चुअली, इसका ना 4 गोल है. ठीक है, so that was you should be knowing it. यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही साइन किया गया था. That's why it's important. So these are actually the 4 goals. पहले अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर रिस्क. पहले आपको समझना है कि रिस्क क्या है. Now what is the meaning of it? Look, I'll give an example. अगर आप इंडिया में हो तो ये वाला पूरा हिमालयन रीजन है. Yes. So this region is famous for what? Earthquake prone area.
मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर अर्थक्वेक आने की इस रीजन में संभावना ज्यादा है भाई, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर एक्चुअली this place is the meeting of two boundaries where actually the tectonic plate movement can happen anytime. इसलिए शायद आपको पता होगा नेपाल में बहुत बार अर्थक्वेक आता है। Why? Because the Indian plate meets with the Tibetan plate, यहाँ पे ये बाउंड्री, यहाँ पे टिबेट प्लेट बाउंड्री बनती है ना, इसीलिए राइट। तो ये बता रहे कि अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर रिस्क, कहां पर कौन सा डिजास्टर होगा, जैसे इस रीजन में कौन सा डिजास्टर होगा, साइक्लोन, सुनामी, यही सब होगा ना, वाटर इरोजन। तो आपको ये पहले समझना है कि कौन सा डिजास्टर रिस्क कहां पर है। स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस ऑफ डिजास्टर रिस्क फॉर मैनेजिंग डिजास्टर रिस्क, यस, इसके लिए एक फ्रेमवर्क है, आपको पता होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज देयर। आर यू अवेयर ऑफ दिस? यस। एंड इसके अंडर में एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इज देयर। एक फोर्स बनाएगी, उनका ऑरेंज कलर का ड्रेस होता है, आपने देखा होगा। So they are for strengthening the governance and all. Investment in disaster reduction. जैसे अभी for example ये न्यूज में था, इन्वेस्टमेंट था खर्चा करना, है ना। So government, central government has given this much amount of money for disaster response, especially when heavy rains have happened and all, है ना। फिर लास्ट में improving the disaster preparedness to ensure effective response, recovery, reconstruction. Disaster preparedness और अच्छा होना चाहिए, जैसे अभी कहा जाता है कि साइक्लोन बीपर जो आया है ना। So we got to know beforehand through early warning system. प्रिपेयर्डनेस का तो क्या होता है, पहले से अगर पता चल जाए तो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम वी कॉल इट, है ना। जैसे यहाँ पे एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद में, दैट्स कॉल्ड एज इनक्वायर्स, यू नो दिस, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इसको पढ़िएगा जाके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ओके। दिस एक्चुअली प्रिडिक्ट्स द साइक्लोन। जैसे अभी बीपर जो आने वाला था, तो हम लोग बता दें कि IMD प्रिडिक्टेड कि कुछ ऐसा जाएगा इस रूट पे, ओके। So we'll get to know कि अच्छा इस रीजन में आएगा, so we have to be prepared in this region, ठीक है। Yes, and that is why you should be knowing it, improving disaster preparedness to ensure effective response and all, ठीक है। So these are the 4 high priorities areas of Sendai this framework for disaster risk, है ना। Yes, El Nino and La Nina are opposite and they are in South Pacific region, yes, हाँ। So that is what is being talked about, and India has established a first G20 disaster risk reduction working group also. That is what the author is talking about. हाँ, ड्यूरिंग साइक्लोन बिपरजॉय इफेक्टिव सिस्टम फॉर एंड टू एंड अर्ली वार्निंग एंड एक्शन हेल्प अचीव 0 डेथ्स। देखो कितना अच्छी बात लिखी है, यही बात बताया ना कि अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम इफेक्टिव था तो पहले से पता चल गया कि इस रूट पे आएगा, तो वी विल बी कॉशियस, है ना। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, है ना। इनक्वायर्स के बारे में पढ़ लेना थोड़ा। अब देखो ये वाला मैंने बता दिया है, रूरल बायस इन नेशनल सर्वे, that we have seen the increase in the percentage of rural areas, but we have not seen since 2011 any census. So perhaps shayad we are doing overestimation of rural areas and underestimation of urban areas. यह मैंने बताया थोड़ा देर पहले, है ना। So that is what is being talked about here. हाँ, Odisha is also very disaster prone, right धनंजय? हाँ, okay. यस, तो इसी से वो परसेंटेज बता रहे हैं, आप देख लो, इतना इसमें रटना नहीं है कि देखो सेंसस का प्रोजेक्शन अभी इतना होगा, वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट इतना है, ठीक है। अर्बन कंपोजिशन अक्रॉस सर्वेज डिफरेंट सर्वे में, ठीक है। सो अंडरवेट सैंपल 24.2%, यहाँ 31.7% दिखा रहे हैं, यहाँ 34% दिखा रहे हैं। सो दीज आर डिफरेंट सर्वेज एंड ऑल, ठीक है। Which state has become the first to pass gig workers right bill? Your options are मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल। Your time starts now. बताइए, फर्स्ट टू पास गिग वर्कर्स राइट्स बिल। सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ गाइस, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ एवरीवन, यस। Yes, the right answer is option B. Rajasthan is the right answer to this question. What is gig worker? क्या होता है, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? गिग वर्कर्स होता है टेम्परेरी वर्कर्स लाइक थिंग, है ना। देखो, व्हाट डज इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर्स राइट बिल स्टेपुलेट, ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल था, है ना। दिस राजस्थान हैज पास्ड इट, ठीक है। सो दे आर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑन कॉल वर्कर्स, टेम्परेरी वर्कर। जैसे आपने देखा होगा जोमैटो डिलीवरी बॉय, आपने देखा होगा जोमैटो डिलीवरी बॉय, यू कैन से दैट कैन बी वन एग्जांपल ऑफ गिग वर्कर, ठीक है। So they need some sort of security, job security, or some sort of formal treatment and all. That is what you should be knowing it. Huh? Yes. Swiggy delivery boy. Yes, Pranjali, good. तो उसी के लिए it is the first law in India for their welfare and applies to aggregators, digital intermediaries connecting buyers and sellers, primary employers and all, है ना.
इट प्रपोजेस अ वेलफेयर बोर्ड की बात कही गई है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. तो एक्चुअली दैट इज, है ना, मेंटेन अ डाटाबेस ऑफ द कंपनी. सारा डेटा होगा कंपनीज का, किसके पास कितने गिग वर्कर्स हैं, है ना. एंड देयर विल बी अ यूनिक आईडी विल बी प्रोवाइडेड व्हिच शैल बी वैलिड फॉर परपेचुइटी, मतलब हमेशा के लिए, फॉरएवर. एक आईडी दिया जाएगा उन लोगों को जो हमेशा के लिए वैलिड रहेगी. मतलब इवन इफ दे स्विच द अदर कंपनी, दोस थिंग्स विल बी वैलिड एंड ऑल स्टिल, ठीक है. तो इसी सब की बात कही गई. दैट इज व्हाट इट वाज इन द न्यूज़. गवर्नमेंट लॉन्चेस मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, है ना, as a culminating event of आजादी का अमृत महोत्सव. आपको पता है we are celebrating 75 years of independence, that is called as आजादी का अमृत महोत्सव. Okay, and मेरी माटी मेरा देश कैंपेन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग एंड ऑल इन दिस रिगार्ड. इसको थोड़ा सा अपने से पढ़ लेना, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन. जस्ट रीड इट आफ्टर द क्लास इज ओवर, ठीक है. And we'll be running very soon the marathon session on YouTube channel, so please subscribe to our channel. सबको subscribe करते जाना, है ना. And please press the like button, guys. We'll be coming up soon with the marathon series. हाँ 76th year है, लेकिन 75 year complete किया. Yes. So हाँ अमृत काल जो है, जो आप बता रहे हो, वो 75 से 100 years के बीच को माना जा रहा ऑफ इंडिपेंडेंस को, ठीक है. ओके. So please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.